Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about personality development. Personality development is topic for English 1, that is for first semester BS and BBS. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो एकेडमिकली स्टूडेंट्स को इस पे फोकस करना चाहिए कि उनकी आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में इसकी बड़ी अहमियत होती है और स्टूडेंट्स को मतलब फुली इस टॉपिक को और इस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे कि नेम से क्लियर है डिफिनीशन पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? Personality development is the development of the organized pattern of behaviors and attitudes that makes a person distinctive. मतलब ये एटीट्यूड का बिहेवियर का एक ऐसा अंदाज़ है जो एक पर्सन को, एक शख्स को मुनफरद बनाता है, डिस्टिंक्टिव बनाता है, मुनफरद बनाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकर्स बाय द ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब वाक़या होती है जो एक इंसान जो है वो ज़हनी लेवल पे या उसकी किरदार के हिसाब से या माहौल में किस तरह जो है वो इंटरेक्शन करता है, हिस्सा लेता है। तो वो जो इंटरेक्शन है या जिन एस्पेक्ट्स में वो हिस्सा लेता है तो वो उसकी पर्सनालिटी पे असरानंदाज होती है। So it is a very common proverb that society molds the man. तो जैसे इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो वो लाजमी बात है आपकी पर्सनालिटी पे असरानंदाज होगी। So generally personality development has become an important tool today for developing overall skills within a person that help him to develop professionally as well as personally. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ऐसी चीज़ें सारी शामिल है कि एक बंदे को, एक इंसान को वो प्रोफेशनली यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वो काम करता है, जॉब में या किसी भी हवाले से प्रोफेशन से वो मुंसलिक है, तो उसमें भी अगर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है तो वो सारी स्किल उसको हेल्प देते हैं एज़ वेल एज़ पर्सनली, और उसकी पर्सनल ज़ाती शख्सी ज़िंदगी में भी उसको वो बड़े फ़वाइद दे सकते हैं। So a great personality includes knowing how to dress well. अच्छा, ये चीज़ पर्सनालिटी में काउंट होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वक्त इन एस्पेक्ट्स को फोकस करना चाहिए। सो नविंग हाउ टू ड्रेस वेल, सोशल ग्रेसेस, आपने मतलब सोशल जो लेवल्स है, जो पीपल है उनके दरमियान अपना ग्रेस, उम्दगी किस तरह बरकरार रखनी है। ग्रूमिंग को किस तरह ख़ुद को मतलब वो करना है, ग्रूम करना है, इक्विप करना है। स्पीच, आपकी बात एंड इंटरपर्सनल स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन और मिल जोल का जो स्किल है वो, ये सारी चीज़ें जो है पर्सनालिटी के अंदर काउंट होती है। सो वट एवर यूर करियर, these are vital skills that will promote your objectives and also helps you in your day-to-day life. आपका करियर, आपका जॉब, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड है, यू हैव पर्सनालिटी स्किल्स, सो दे विल हेल्प यू। एवरीवन लाइक्स टू इंटरेक्ट विद अ पर्सन हैविंग एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जनरली ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के साथ मेल जोल होता है। आप ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ मिल के बात करके आपको ऐसा लगता है कि बस ये इनके साथ आप बोलते जाए, बैठे रहे और बात करते रहें। तो ये क्यों होता है? इसके अपोजिट जो है, ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब आप उनसे चनी बातें करते हैं तो आप उकता जाते हैं। आप कहते हैं कि यार बस मैं अब ये कन्वर्सेशन जो है ये मैं वाइंड अप करूं और इनसे जान छूट जाए। तो ये क्यों होता है? सो ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी। कुछ लोगों की पर्सनालिटी में इतना अट्रैक्शन होता है कि आप उनसे मतलब क्या वाबस्तगी आपकी हो जाती है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। और कुछ लोग पर्सनालिटी लिहाज से वो बैर होते हैं, उन लैक आप उनमें स्किल्स होते हैं या उसमें कुछ ऐसी नहीं होती बात कि आपको अट्रैक्ट करे उनकी पर्सनालिटी में, तो आप उनसे मतलब उकता जाते हैं। सो वाई इज़ पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है?
Actually, a great overall personality is very important in the life of an individual. Everyone is influenced by an attractive personality, whether it is an interview for a job or having a conversation with your friend circle. There are certain traits and characteristics that you must possess to make your mark and have an impressive conversation. Without influencing others, you cannot get success in today's competitive world. सो जनरली ये होता है कि जॉब्स के लिए या प्रमोशन के लिए या कोई सीट के लिए जनरली पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं. बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं बॉसेस और वो आपको ऑब्ज़र्व करता है. सो विद मैनी अदर एस्पेक्ट्स दे आल्सो एवेल्यूएट योर पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी को भी इवैल्यूएट करते हैं कि किस तरह आपका जो टॉकिंग स्टाइल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके मेंटल नॉलेज जो है, ये सारी चीज़ें मिल के आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है. इसकी इम्पोर्टेंस अहमियत ये हमने डिस्कस की कि विदाउट हैविंग एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ. दिस इज़ कम्पिटिटिव वर्ल्ड. यहाँ मुकाबला है. एक मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एक पोस्ट के लिए या जो एक लेवल है उसके लिए दौड़ में लगे हुए होते हैं. सो हु इज़ द विनर और हु विल बी द विनर? द विनर विल बी द पर्सन हु शोज कॉन्फिडेंस, कम्पिटेंट, हु इज़ कम्पिटेंट, जो है उसके लिए compete करे और मतलब पर्सनालिटी के ज़रिए से, अपने स्किल के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से वो प्रूव करे दैट ही इज़ द राइट मैन फॉर दिस जॉब. सो जनरली जॉब से हटकर अगर हम देखें तो सोशली भी हम पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं. इसकी बड़ी अहमियत है. इसकी अहमियत ये है कि आप देखें फैमिलीज़ में मतलब एक बंदा होता है जो उम्र के लिहाज से वो इतना बड़ा नहीं होता है. ही इज़ नॉट एल्डरली मैन, but because of some traits of his personality, he wins all people. He becomes the leader of the family. He decides different things for the family because of what? Because of his personality. तो पर्सनालिटी बाद वक्त हम ये भी देखते हैं ऑफिस में कि एक बंदा होता है जी 15 ईयर्स से 10 ईयर्स से 20 ईयर्स से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है और अचानक ऐसे में एक न्यू एम्प्लॉई एंटर हो जाता है एंड विद इन 2-3 ईयर्स और लेस टाइम ही क्रॉसेस हिम. वो मतलब आगे बढ़ जाता है. वो डिजिग्नेशन के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से या उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से वो ऑर्गेनाइजेशन में आगे चला जाता है. तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड, बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी. अगर डेवलप्ड पर्सनालिटी है सो यू हैव मैनी चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, whether that is your personal life, your social life or that is your professional career. हर लिहाज से जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो आपको फ़ायदा देगी. सो व्हाट मेक्स द पर्सनालिटी डेवलप्ड? कौन सी चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट देती है, जिससे पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है? सो द फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस. अच्छी पर्सनालिटी जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है या एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपको अच्छी पर्सनालिटी देती है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस. A great personality tends to give a boost to your confidence. जब आपकी पर्सनालिटी सॉलिड हो, आप हर लिहाज से ख़ुद को परफेक्ट समझ रहे हो, तो ऐसे अंदाज में आपको कॉन्फिडेंस मिल जाते हैं, आपको ख़ुद पे भरोसा हो जाता है. जो हर काम को सर अंजाम देने के लिए जो इनिशियल जो फर्स्ट चीज़ है कॉन्फिडेंस, वो आपको मिल जाता है जब आपकी पर्सनालिटी सॉलिड हो. सेकंड जो है, अच्छी पर्सनालिटी इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल या वाइस वर्सा आप ले लें. मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है सो इट कैन गिव यू अ गुड पर्सनालिटी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है आपकी क्या करती है? इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप जो है कम्युनिकेशन स्किल को फोकस करते हैं
کہ ان کے جو آپ بولتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہی آپ کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. So a lot of emphasis is given to improving communication skills during personality development. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس جب آپ کرتے ہیں یا آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کمیونیکیشن سکلز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. Possessing good communication skill is very important both for personal and professional life. دونوں لائفس کے لیے یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے. People are more receptive to what you say if they are impressed with your personality. Verbal communication skills are also part of personality development. Improving your speech will strengthen the impact of your message. جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کا وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو وہ اس کے اثر کو، تاثیر کو لسنرز پر، آڈینسز پر زیادہ اس کا اثر اچھا پڑے گا. سو ناؤ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ دیتا ہے ٹو ڈیولپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. Generally, it is very common, first you should have a very good communication skill, then you should have positive communication. Attitude آپ کا positive ہونا چاہیے. It's not important that you analyze everything with a critical angle. No, positive attitude is really important for one to progress in life. A person with a positive attitude always looks at the brighter side and is always on the developmental path. جو لوگ پازیٹیو سائڈس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے ڈیولپمنٹل چانسز جو ہے وہ زیادہ آ جاتے ہیں. As compared to the person, an individual with a negative attitude, he always finds problem in every situation. So it's not important that you just cribbing and criticizing people around. Analyze the whole situation and try to find an appreciate solution for the same. مسائل کو آپ جانچیں پرکھیں اور کوشش کریں کہ پازیٹیو اور کوئی مناسب سلیوشن اس کے لیے ڈھونڈیں، بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو اور تنقیدی رویہ اختیار کریں. Remember, if there is a problem, there has to be a solution as well. جہاں پہ مسئلہ ہے وہاں پہ ایک حل بھی ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں، نہیں کہ بس ذہن کو یا باتوں کو یا اپنی کمیونیکیشن کو تنقید میں اور نیگیٹو ڈسکشن میں الجھائے رکھیں. ڈیولپنگ نیور لوز یور کول ٹیمپر. اٹ وڈ میک دا سچویشن ورس. اگر آپ جو ہے اپنے ایٹیچیوڈ کو زیادہ نگیٹو بناتے ہیں تو یہ حالات کو، مسئلے کو اور بھی خراب کر سکتے ہیں. So developing a positive attitude even in a hopeless situation is the part of personality development program. Personality development program جو ہے یہ ہمیشہ آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے positive attitude اختیار کرنا ہے. Another aspect of personality development is your dress, how you dress. Dress makes you credible. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ڈریس اور اٹائر پر جو ہے بھی بہت فوکس کیا جاتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے پراپر ڈریسنگ سینس اینڈ پکنگ اپ رائٹ ڈریس فار یو. اچھا، ڈریس کے حوالے سے جو بات ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایکسپینسو کلوتھس پہنے. نو، you may have seen the people with very expensive clothes but they don't look impressive. On the other hand, you may have seen the people with quite common dress, less expensive, but they look adorable, very graceful. So the sense of dress is very important. یہ امپورٹنٹ نہیں کہ آپ کیا پہنتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے آپ کیسے پہنتے ہیں، کس طرح، مطلب اپنے لکس کے حساب سے آپ سلیکٹنگ ڈریس. پرسنالٹی جو ہے آپ کی پرسنالٹی مین سلیکشن آف کلر، سلیکشن آف گارمنٹ سائز اینڈ اسٹائلس، یہ امپورٹنٹ ہے. سو ڈریس بہت بڑا جنرلی ایک عام پروورب ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. بٹ جنرلی ایسا ہوتا ہے آج کل. اٹس ناٹ آلویز رائٹ ٹرو. You don't judge a book by its cover.
لوگ آج کل آپ کی کور کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کی لکس کو بھی دیکھتے ہیں. سو ڈریس ہیز اے ویری گڈ امپیکٹ ان وٹ جنرلی ان یور پرسنالٹی. نیکسٹ تھنگ از دیٹ از یور اسپیکنگ اسٹائل. اسپیکنگ اسٹائل جو ہے یہ بھی بہت حد تک جو ہے اثر انداز ہوتا ہے کس چیز پر، آپ کی پرسنالٹی پر. کس طرح آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ کنورسیشن میں انگیج ہوتے ہیں، اور کس طرح آپ جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو مینٹین اے گڈ اسپیکنگ اسٹائل اینڈ ایکسپریشنز ایز ویل. Most of the successful persons maintain a unique style of speaking. They speak clearly and forcefully. Be careful that you have a good command of the language you speak. جنرلی سکسیزفل پیپل یا باسز کے ساتھ آپ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرز ہوتا ہے، ان کی کمیونیکیشن کا ایک انداز ہوتا ہے، اسٹائل آف اسپیکنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے دیٹ از فرام کامن پیپل. Try to speak slowly, clearly, and try to make an impression on your listeners. So, speaking style بھی بڑا عمل دخل رکھتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. نیکسٹ تھنگ از یور نالج. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا نالج گین کریں. Because whatever you speak, that represents your personality, that represents your inner. سو اپنی شخصیت کو گروم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نالج سے آراستہ کریں. وٹ سارٹ آف نالج؟ آل ٹائپ آف نالج. نالج اباؤٹ یور جاب، نالج اباؤٹ یور ڈیوٹی، یور رسپانسبلٹیز، سوشل نالج، ریلیجیس نالج، امپورٹنٹ ایسپیکٹس جتنی بھی ہے لائف یا پروفیشنل یا پرسنل لائف کے حوالے سے جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں ان سارے کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، نالج گین کرنا ہے. سو جب آپ کے پاس نالج ہوگا سو پھر آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ خود بخود کیا ہوگی، امپریسو ہوگی. جتنی بھی موٹیویشنل اسپیکر دے آپ دیکھتے ہیں وین یو لسن دیم یو گیٹ امپریسڈ. واٹس دا ریزن؟ دا ریزن از دیٹ جتنی بھی باتیں ایسپیکٹس ہم نے ڈسکس کیے اس لیکچر میں، یہ ساری باتیں ان کی پرسنالٹی میں آپ دیکھیں گے. وہ بکس ریڈ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے وہ کہا ہے، تو ایسے تو نہیں کہتے. انہوں نے بکس ریڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں. سو گڈ ریڈرس آر آلویز یو کین سے دے ہیو ویری گڈ پرسنالٹی. So I hope you understand. If you have any question, you can ask me. Thank you.